लाए सुबह सांझी अब्बा तन के केड़ी खबर असांजे सूरन जी अब्बा। दादा असांजो गोठ वेझो आहे, दिलगीर न थी, असां थोरी देर में पंजन बचड़न लाए खाधो खणी था अचूं। पर दादा तव्हांजे गोठ जे हर घर ते पार्टीअ जा झंडा लगल हुआ ऐं दादा तव्हांजो सॼो गोठ उन पार्टीअ जो गढ़ हुयो। पोइ पार्टीअ वारनि या भोतार का सार न लधी छा तव्हांजी दादा? अरे अब्बा सिंध सुञी थी वई बच्चा। अरे अब्बा घर घर जो दुश्मन आहे। भोतार जो पी गोठ में रहंदो हुयो, गोठ जे सूर में गॾु हूंदो हुयो अब्बा। मुसीबतूं आयूं पर गॾिजी मुंहुं ॾिनोसीं। पर हाणे भोतार त गोठ में रहे ई कोन अब्बा, न को वरी नज़र अचे। सॼो वक़्तु कराची ऐं दुबई ऐं लंडन में पियो गुज़ारे अब्बा। वज़ीर दोस्त अथसि, उन जो सॼो हिसाब किताब ऐं कमीशन सॼो भोतार खे संभाले ॾियो अचनि। सो हाणे अब्बा ज़मीन ते बि को ध्यानु कोन अथसि। ॾाढा असुल चौधारी भींग अथई। असां वारे भोतार जो बि हाल इहो ई आहे। पर असां ॻोठ वारनि मुड़सी करे पंजनि ॿारनि खे पढ़ायो ऐं हुनरमंद बणायो। सो असां सुखिया आहियूं ऐं असांजे कंहिं बि घर ते झंडो न ॾिसंदे ॾाॾा। सो आख़िर में मुड़सी पंहिंजी कम ईंदी ॾाॾा। ॿिए जो कहिड़ो इंतज़ार कंदासीं। कौल हजरत अली अलैहिस्सलाम। टिन ॻाल्हियुनि खे यादि रखो, एहसान, नसीहत ऐं मौत। सियारे सहरात में जा घिड़े वसंदे मींह। हलो त पुछूं सुहणीअ जा कर जाने नी। हलो त पुछूं सुहणी जा कर जाने नी। जिंखे रातो ॾींहुं मेहारे मन में। हर खबर अवाला है। हेडलाइन न्यूज इज brought to you by अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमी ॾिसी रहिया आहियो मेहरान टीवी न्यूज़ ऐं आऊं आहियां रुखसार पंवहर। सभ खां पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइंस ते। सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अॼु बि बरसात जी अॻकथी। कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में अॼु मंझंदि जो बरसात जो इम्कान। दादू, सेवण ऐं कंबर शहदादकोट में मींहुं वसंदो। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज जो चवणु आहे त थरपारकर, उमरकोट ऐं बदीन में ईंदड़ 2 ॾींहं में बरसात जो इम्कान आहे। ही बरसातूं बि चौमासी जे वसकारे जो सिलसिलो आहिनि। 22 या 23 सेप्टेम्बर खां हिकु नए बरसाती सिलसिले जो इम्कान आहे। भानसदाबाद ऐं जोही शहर जे रिंग बंदनि ते पाणी जे दबाव में घटिताई। सेंवर तालुके जे 10 ई मुतासिर यूसीज़ अंदर पाणी में 2 फुटनि ताईं लाथ। झांगारा, बाजारा, आराजी, जाफराबाद, चना ऐं ॿियनि यूसीज़ जे ॻोठनि मां पाणी निकिरण लॻो। जोही रिंग बंद ते दबाव में मुसलसल घटिताई। मुख़्तलिफ़ हंधनि ते पाणी में 1.5 फुट ताईं लाथ।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु थींदो। इजलास में बोर्ड सूरत हाल ऐं इमदादी सरगर्मियुनि ते गौर वीचार कयो वेंदो। हज कोटा खां इज़ाफ़ी बुकिंग बाबति जांच जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। कानून बाबति कमेटी जे फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी बि एजेंडा में शामिल। कराची में डेंगी ते ज़ाब्तो न आयो। 24 कलाकनि दौरान वधीक ॿ ॼणा फ़ौत। हलंदड़ महीने फ़ौतनि जो अंग नव थी वियो। 24 कलाकनि दौरान कराची शहर में डेंगी जा 115 केस रिपोर्ट। मुतासिर मरीज़नि जो अंग 950 थी वियो। सिहत खाते जो चवणु आहे त सॼी सिंध में हलंदड़ महीने डेंगी वायरस जे मरीज़नि जो अंग 1066 थी वियो आहे। हिकु साल में सूबे अंदरि डेंगी जा 3667 केस रिपोर्ट थिया आहिनि। निपो ख़ासि वेझो कार इल्ज़ाम हेठि ॿिटो क़त्ल। ॻोठ अली बख्श मरी में जवाबदार पंहिंजी भाइटी ऐं नौजवान खे बंदूक जा फायर करे क़त्ल करे छॾियो। मक़तूला सीमा मरी ऐं नौजवान विष्णु मेघवार जा लाश अस्पताल मुंतक़िल। जवाबदार गिरफ़्तार। Headline News was brought to you by नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु थींदो। इजलास में बोर्ड सूरत हाल ऐं इमदादी सरगर्मियुनि ते गौर वीचार कयो वेंदो। हज कोटा खां इज़ाफ़ी बुकिंग बाबति जांच जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। इजलास में कानून बाबति कमेटी जे ॿिनि इजलासनि जे फ़ैसिलनि जी मंज़ूरी बि एजेंडा में शामिल आहे। नाज़रीन, अवांखे घिरो ॿीहर ई ब्रेकिंग न्यूज़ ॾियूं पिया त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास अॼु थींदो। इजलास में बोर्ड सूरत हाल ऐं इमदादी सरगर्मियुनि ते गौर वीचार कयो वेंदो। हज कोटा खां इज़ाफ़ी बुकिंग बाबति जांच जो बि जाइज़ो वरितो वेंदो। इजलास में कानून बाबति कमेटी जे ॿिनि इजलास In Mississippi, USA, residents were told to evacuate the city as it braces for more flooding. The climate change risk index of 2021 reports that Pakistan is ranked 8th among countries most vulnerable to climate crisis, despite contributing less than 1% to global carbon emissions. The United Nations Secretary General, Honorable Antonio, who visited our flood-ravaged areas on the weekend, said, I quote, "It is unimaginable. Today it is Pakistan. Tomorrow it could be your country. Wherever you live, this is a global crisis. It requires a global response." He identified a two-pronged strategy to prevent such catastrophic effects of climate change. Firstly,
He called upon G20 countries to immediately boost their national greenhouse gas emission reduction targets every year. Secondly, the Secretary General also called for new mechanism for debt relief for climate vulnerable countries such as Pakistan. He was advocating for debt swap in which the debtor nations, instead of continuing to make external debt payments, would make payments to finance climate projects at home. He urged for prompt action by the international community, especially the elected representative world over, as he concluded, it is a question of justice. Pakistan is paying the price of something that was created by others. The irreparable loss of precious lives and destruction of even the basic infrastructure such as roads, houses, schools, and basic health units by the recent floods makes it imperative for the Parliament of Pakistan to leave no stone unturned in our efforts of rescue, rehabilitation, and rebuilding. I ensure that the National Assembly of Pakistan will continue to perform a proactive role in a passionate IPU member state through consolidation of joint endeavors for strengthening the democratic tradition in Asia-Pacific region, including but not limited to introducing innovative parliamentary mechanism for institutionalizing the 2030 development agenda. The parliaments are the citadel of people's aspirations that utilize their recognized authority through numerous parliamentary tools of representation, legislation and oversight of the executive, especially with regards to human emancipation of vulnerable strata of society. In this context, I am looking forward to this seminar's conclusive outcome for the benefits and mutual good of all people living in the Asia-Pacific region at large. Lastly, on behalf of the people and the Parliament of Pakistan, I wish success to all the learned members of Parliament from the Asia-Pacific region, the parliamentary delegations, all national as well as international dignitaries, and area experts attending the third regional seminars for the Asia-Pacific region Parliament on achieving the SDGs. I look forward and hope the outcome document of the seminar will surely provide concrete way forward on all of the crucial themes under discussion, especially with regards to the dire threat of global climate change that endangers people beyond borders and nationalities. Long live our continued passion and joint endeavors towards an integrated set of way forward for implementation of SDGs besides the challenges posed by natural calamities, man-made disasters, and the COVID-19 pandemic. I thank you all once again, ladies and gentlemen. Pakistan Zindabad. Well, I have been, honorable guests, I bring into your kind notice that we have discussed with the IPU President to bring emergency agenda item at the next IPU General Assembly in Rwanda to highlight developing countries of endanger of climate change, negative effects on their economies, and responsibility of the rich nations to take corrective actions. And I am grateful to the President that he has accepted to help us to bring this agenda item. Thank you very much. Thank you very much, Honourable Speaker. Ladies and gentlemen, the endeavour of bringing an emergency item at Kigali, Rwanda next month
is indeed going to be a turning point for all the developing nations, and we must shed our mutual differences and join hands on this important issue so as to highlight the plight of our people, irrespective of our borders, languages, races, or our countries. With this, ladies and gentlemen, this inaugural ceremony comes to its close. We will break for tea, after which we'll reassemble in the designated committee rooms as well as in this hall for our breakout sessions. I thank you all. We will have a group photo right in front of the podium. May I request all the delegates from the Asia-Pacific region and the honorable parliamentarians from Pakistan to kindly assemble in front of the dais so that the honorable speaker and the president of the IPU may join you. Congratulations. खासाए खासानी रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है हमारी पाक सरजमीन गुजर रही है हालिया सैलाब से करोड़ों की तादाद में हमारे पाकिस्तानी कुंबे नाज़रीन ही हुयूं हिन वक्त ताईं जूं ख़बरूं वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ विज़िट कना असांजी वेबसाइट mehran.tv ऐं हर पल अपडेट रहण जे लाइ ॾिसंदा रहो मेहरान टीवी न्यूज़। हेलो